Yes, hello class, good afternoon. In previous class we have completed second chapter, first chapter that is integers. Now we are heading on to the next chapter that is fraction and decimal. So we have received the first part of fraction and decimal, in which you have gone through different types of fractions. Okay. So now in this part we will be covering our exercise. So now we will start with our practice exercise 2A. Okay. So now first sum, solve the following. So we have to solve minus 3 upon 7 plus 1 upon 3. So now as we all know that both the denominators, okay, are different, okay, they are unlike terms. So when they are unlike terms, what we will do, we will take LCM. So our LCM is nothing but 21. Okay, so it will be 7 into 3, that will be 21 minus, so we will multiply in numerator as well as denominator the same number, so that will be multiplied by 3. Similarly, what number we will multiply to 3, that will be 7, so I'll multiply 7 both the sides, so in numerator as well as denominator. So our answer will be minus 9 plus 21 plus 7 upon 21. Now as you all can see or notice that both the denominators are same, so now it is like term. So when it is like term, what we do, we instead take we instead add or subtract the numerator. Okay, so similarly minus 9 plus 7 upon 21, that will give us minus 2 upon 21. Okay, now there is no need to convert or change this thing. Okay, the reason is just simple, that it is which kind of fraction, perfectly, it is nothing but proper fraction. Okay, similarly, we'll go on to the second sum. So second sum is 7 upon 9 plus minus 7 upon 36. So taking LCM, because both the denominators are different. So 7 into 4 upon 9 into 4 plus minus 7 into 1 into 36 upon 1, because the LCM will be 36. So that will be 28 plus minus 7 upon 36. Plus minus becomes minus, so 28 minus 7 upon 36, that will give me 21 upon 36 or 7 upon 12. Now what is the reason for this 7 upon 12? That is in the table of 3, it 21 comes at 7 because both have the common table of 3. So 3 sevens are 3 12s are, so that will give me nothing but 12 upon 7 upon 12. Okay, similarly we'll go on to the next sum, that is 4 upon 15 minus of minus 7 upon 9. Now again we can see that both the numbers are different, so we'll take the LCM. So LCM will be 3 into 3 into 5. Okay, so 3 into 3 into 5, so that will be nothing but 45. So 4 into 3 upon 15 upon 3, because we have to convert that denominator into 15, 45. So which number we will multiply to 15? So we will multiply 3 to get 45. Similarly 9 we will multiply 5. Okay, the reason is we have to get the answer 45. So that will be 12 upon 45 minus of minus 35 upon 45. So minus of minus will be plus, so 12 plus 35, that will give me that will give me 47 upon 45. Now as you can see, this is which kind of fraction, it is improper fraction. So improper fraction we will convert into mixed fraction. Okay, so that will be 1 2 upon 45. A simple calculation, no error of margin in this kind of sums. Now the next sum is 3 1 upon 6 minus 5 5 upon 9. Now in this sum, what is the first condition? It's a mixed fraction, so we'll convert into improper. So that will give me minus 19 upon 6 minus 50 upon 9. So if I convert this thing, that will be okay. So taking LCM, so LCM will be 2 into 3 into 3, so that will be 18. So now we want our denominator to be 18, so I'll multiply 6 with 3 and 9 with 2. So similarly numerator also, so 19 minus 19 upon 6 becomes minus 19 into 3 upon 6 into 3 and 50 into 2 upon 9 into 2. Okay,
So minus 57 upon 18 minus 100 upon 18. So that will be nothing but minus 57 minus 100, that will give me minus 157 upon 18. So that will give me, that is which kind of fraction? That is nothing but improper fraction. So improper fraction will become into mixed fraction, that will be minus 8 13 upon 18. Okay, so we have to solve this sum in this kind of simpler manner or simpler way. So now we'll go for the fifth sum. 5 upon 9 plus minus 7 upon 36 minus of minus 5 upon 36. So again we can see that we have to take the LCM as the numbers are different in the denominator. So LCM will be nothing but 2 into 2 into 3 into 3. So that will be 36 will be our LCM. So you can pause the video and you can check what kind of LCM I have done, and if you have any kind of error you can ask me. So that will 5 into, so I have to make all the denominators 36. So 9 I'll multiply by 4, 36 I'll multiply by 1. So that will be 5 into 4 upon 9 into 4 plus minus 7 into 1 upon 36 into 1 minus of minus 5 into 1 upon 36 into 1. So that will be 20 upon 36 plus minus 7 upon 36 and minus of minus 5 upon 36. So 20 minus 7, that will be 13, 13 plus 5 will be 18, 18 upon 36, that will be 1 upon 2. So in the table of 18, if we divide 18 with 18, that will be 18 ones are 18, and if we divide 36 by 18, that will be 2. Okay, so 1 upon 2. So 18 is the common factor between 18 and 36. Fine. You can pause the video and you can check, look out the sum how I have done. So you can do it in the same manner. Now similarly we will be doing the sixth sum. 2 upon 8 plus 3 minus 2 upon 8 plus minus 3 upon 40 plus 6 upon 40. So that will be again all the as the denominators are different, so we will be taking LCM. So LCM will be 2 into 2 into 2 into 5. Okay, so you can check how I did the LCM. LCM is as simple as nothing. Now we'll be doing the same thing, that is 2 into 2 into 2 into 5, that will be 40. So I want my denominator to be 40, so I'll multiply 8 with 5, 40 with 1. Okay, so same way I'll multiply in the denominator as well as numerator. So multiply by 5 in denominator, multiply by 5 in numerator. Okay, multiply by 1 in denominator, multiply by 1 in numerator. Okay, so that will give me 2 into 5 10, minus 3 into 1 minus 3, 6 into 1 6. So that will be 10 plus minus 3 plus 6. So that will be 7. 10 minus 3 will be 7, 7 plus 6 will be 13, 13 upon 40 is the answer. So you can take a pause and you can check how I have solved the sum, what kind of things I have done in this kind of sums. Okay, now next sum is 4 upon 15 minus of minus 7 upon 9 minus of 3 whole 3 upon 4, 3 whole 4 upon 9. So in this sum, as we all see that the denominators are different, so I'll take the LCM. So my LCM will be 3 into 3 into 5, so that will be 45. So I'll multiply 15 with 3, 9 with 5. So 4 into 3 upon 15 into 3 minus 7 into 5 upon 9 upon 5 minus 31 into 5 into 9 upon 5. So 12 minus of minus 35 upon 45 minus 155 upon 45. So that will give me 12 plus 35 minus 155 upon 45. So that will be minus 108 upon 45. That will be minus 12 upon 5. Now how minus 12 upon 5? So I have cancelled this number with which by, yes, by 12. Okay, by 9 I have cancelled. So if I the common factor between both the numbers is 9, so I have cancelled with 9. So that will be minus 12 upon 5. So that will be minus 2 whole upon minus 2 whole 2 upon 5 will be our answer. So you can check both the sums how I have done this kind of sum. So you can go through this sum, pause the video and you can copy it. Now the next sum is, so the next sum is minus 3 1 upon 4 minus 5 whole 5 upon 9 plus 3 whole 7 upon 9. So in this sum what we will do? Yes, we will take again the LCM. So LCM will be 2 into 2 into 3 into 3. So that will be 36.
same kind of method. So that will be minus 181, and that is improper, so I'll convert into proper fraction. So you can check the sum, you can try this by yourself, else you can pause the video and complete the rest of the steps. Okay, now the next sum. What happens to the value of fraction if the denominator of fraction is decreased while the numerator is kept unchanged? अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या होगा फ्रैक्शन की वैल्यू में अगर डिनोमिनेटर को हम लोग घटा दे और न्यूमरेटर को वैसा ही रखे. सो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीजेज. अब इसका आंसर कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर लेता हूँ 2/5 और उसको मैंने घटा दिया 2/3 पे. 2/2 भी ले सकता हूँ, 2/1 भी ले सकता हूँ, ओके, 2/2 2/4 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ. ओके, बट अगर मैं 2/5 को घटाकर 2/3 कर देता हूँ तो क्या होगा? हियर द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, आई विल टेक द एलसीएम, दैट इज 5 × 3 15. अब 15 लाना है तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और 3 को 5 के साथ. सो दोनों न्यूमरेटर्स में भी मल्टीप्लाई बाई 3 जहाँ पर होगा वहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 5 जहाँ पर होगा वहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 5 न्यूमरेटर में. सो दैट विल गिव मी 6/15 एंड 10/15. अब यहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 2/5 बड़ा है या 2/3 बड़ा है? बट ऑब्वियस है जब दोनों लाइक फ्रैक्शन होते हैं तब हम लोग कौन सी वैल्यू देखते हैं? न्यूमरेटर की वैल्यू, और जो वैल्यू बड़ी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिगर नंबर. ओके, सो हेंस 10/5 इज ग्रेटर देन 6/15. सो व्हेन द डिनोमिनेटर डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीजेज. सो यहाँ पर हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि जब एक डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर घट जाती है तो दूसरे अगर दोनों न्यूमरेटर की वैल्यू सेम है, ओके, और एक वैल्यू जब घट जाती है, एक डिनोमिनेटर की वैल्यू हम घटा देते हैं दूसरे डिनोमिनेटर से तो वो वैल्यू बढ़ जाती है. ठीक है, जो घटी हुई वैल्यू होती है दैट विल बी द बिगर वैल्यू. ओके, so you can go through this sum, you can copy the statement and everything which you want to copy and pause the video. Now the next sum. So a rectangular poster of wild animals is 12 whole 1/6 centimeter long and 10 1/4 centimeter wide. Find its perimeter. अब rectangular poster तो perimeter of rectangle, तो first of all हम लोगों को mixed fraction दिया, तो mixed fraction को हम क्या करेंगे? यस, कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में. सो मिक्स फ्रैक्शन को अगर मैं इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करता हूँ सो दैट विल बी 12 1/6 सेंटीमीटर, दैट विल बी 73/6 सेंटीमीटर, और ब्रेथ बन जाएगा 41/4. ओके, लॉन्ग मतलब लेंथ हो गया, वाइड मतलब ब्रेथ हो गया. ठीक है, नाउ वी ऑल नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट 2 × लेंथ × ब्रेथ. सो 73/6 प्लस 41/4. सो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों की वैल्यूज सेम नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे? एलसीएम लेके सेम करेंगे. डिनोमिनेटर्स की वैल्यू सेम नहीं है तो हम लोग उसको एलसीएम लेके सेम करेंगे. सो एलसीएम विल बी 2 × 2 × 3, दैट विल बी 12. सो 6 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 4 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा. सो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. So that will be 146/12 and 123/12. ओके, सो यहाँ पर अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 269/12, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ. सो अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके, सो अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ सो 2 1 2 6. सो ये आएगा हमारा 269/6, और 269/6 क्या बनेगा? 44/5/6. सो हेंस yes, so you can write the perimeter of rectangular poster is 269/6 or 44/5/6 centimeter. So this is your answer. You can pause the video and you can check out the solution. Now Reshma donate 2/5 part of property to the charitable trust working for child education and remaining part of the property to her son.
हाउ मच पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी डिड हर सन हैव हु हैड द बिगर शेयर, व्हाट वैल्यूज डज रेशमा possesses। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि रेशमा ने अपनी प्रॉपर्टी 2/5 प्रॉपर्टी, ओके, 2/5 पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी उसने चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दी, ठीक है। अब उसके पास, उसके सन के पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, ओके, एंड उसके पास, ये चैरिटेबल ट्रस्ट के पास ज्यादा प्रॉपर्टी होगी और कितनी वैल्यू उसके पास होगी। सो टोटल प्रॉपर्टी कितनी है उसके पास, 1 में से 2/5 पार्ट उसने डोनेट कर दिया, सो दैट विल बी 1 - 2/5। सो हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 5, सो दैट विल बी, इफ आई कैलकुलेट द आंसर विल बी 3/5। सो हैंस रेशमा सन हैज 3/5 पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब बाय कंपेयरिंग हु हैज द लार्जर पार्ट, रेशमा सन हैज द लार्जर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो रेशमा के सन के पास कितनी है, 3/5, और चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है 2/5। सो किसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी हुई और कितने से। सो रेशमा के सन के पास कितनी प्रॉपर्टी हुई, 3/5, और वो चैरिटेबल वालों के पास कितनी हुई, 2/5। सो कितना पार्ट ज़्यादा हुआ, 1/5 पार्ट रेशमा के सन के पास ज़्यादा है। सो हैंस रेशमा सन हैज़ लार्जर प्रॉपर्टी, पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी बाई 1/5, ओके, simple है। So I hope you understand this question, and if you have any doubt you can contact me. So thank you for watching this video.